brief discussion about the last two sessions to the students. Sir told us the effect of COVID-19 on the current industry and how an entrepreneur can play an important role in the redevelopment of the society after pandemic. And sir also told us the role of Kaizen in improving operation effectives. Now I would like Students to can hand over ask students can ask the question during the Raman sir's session by writing in the chat box only. We'll be asking sir the same. Now I hand over the charge to Puneet Raman sir. The floor is all yours, sir. Thank you. Okay, thank you, Adarsh. Thank you, Ria. Welcome to all the students. Good afternoon. I'm also back in your college city, Pune. Previous interactions happened from Delhi, so I'm closer to your college. I hope to see you soon in the college sometime next year. I wish normalcy returns soon. And I hope all of you celebrated Diwali with your loved ones and your family. And thank you, Ria and others, for giving a summary of what we could cover in the first two sessions. The agenda of today is to understand how can we identify problems which can be converted into a business opportunity. What are the some of the techniques of idea generation? And I would love to listen from the students as well that how do you generate ideas? And we have shown you the business model canvas earlier, but we'll give you a glimpse of it because going forward from session number 4, we would be making an individual business model canvas. So all the students, whether you want to do a business or not, whether you have a family business or not, whether you have any inclination, your BBA knowledge or the BCA knowledge will increase once you understand how a company functions. Now, whether a company is Google, Reliance, Airbnb, Tata Communications, or a college, Bharati Vidyapeeth, IMED, or a school, every business has a business model. And let us understand the business model canvas. So this would be the context. So the first input is what are the problems which you have faced in your life? every all of us would have faced some problems in our life, and if we are not solving those problems, someone else is solving the problem and he or she has made a business out of it. Now when he or she can make a business out of it from our solving our problems, maybe we can also do the same by understanding what are the problems which people face, maybe of your age group, maybe senior citizens, maybe working women, maybe homemakers, maybe young children, anything. So think about, start making a list, and I will share the screen and we'll talk about how a problem is converted into an idea. Because idea, most of us say I've got a business idea. Now what is an idea? Idea is nothing but a solution to a problem of more than one person. Now if the problem is only yours, cannot be converted into a business. But if you do research and find out that this problem is faced by so many people, maybe they want home quality food or home stayed food while staying in the hostel. Maybe they want a one-stop solution to have all their hostel boarding and all the food and lodging facilities. Maybe they want a coaching or a mentoring service, or maybe they want something to do with a job support, or maybe they want a single stop solution for travel, maybe Airbnb or Zoom car. So think about the problems first, because most of the great businesses are solving big problems of the world. And when you solve a problem of someone, whether it's a person or a company, they don't mind giving you money for that. Just think over it. Why do you give money to a doctor, but you don't give money to a chemist for consulting? You give money to a chemist for buying medicine, but you never give money to a chemist for consulting. But you give money to a doctor for consulting. The doctor may or may not, in most cases, they do not give you a medicine, they recommend. Why do you give money to a college? Why do you give your fees? When you buy a mineral water or when you buy something from Amazon, why do you give money? When you buy something from Uber Eats, Swiggy, or Zomato, why do you give money to them? Think about what is the problem which they are solving. Why do you give subscription money to Netflix or Hotstar or Disney or whatever?
Why do you give money when you buy an Apple product? Why do you give money when you buy a Nike shoe or an Adidas shoe? So they are all solving problems. Yes, these are big brands. So we'll talk about how you can charge a premium for your product or service. But think about the problems first. So before I'm sharing the slide, parallelly think about what are the problems which you, your family members, or people of your age group or demography, people of the same age, gender, income level, maybe city, have faced, are facing, or are going to face. So think about 2020 as a current year, that in 2020 we faced these three problems. Before 2020 we used to face these problems. After 2020, according to me, so think like this, that according to me, according to others, according to Tarun, according to Ria, what are the problems which people are going to face after 2020? So you can solve a future problem, be like Elon Musk. He is solving the problem of energy or space travel. It is not a current problem. We have enough fuel or fossil fuel to run for 20, 30, 40 years. But then as the fossil fuel will reduce, the price will increase. So it's not going to be affordable, and it's bad for our planet as well, for the pollution. So Elon Musk through Tesla or through SpaceX is solving a 2030 or a 2040 problem. So he's solving a future problem. You can also do that. There are some companies like Amazon who are solving a current problem, that okay, I have lack of time, I have my priorities, I want a discount, I want convenience, I want comfort, I do not want to go out and buy something which is okay. But obviously you will not order jewelry for your marriage on Amazon. If it's your priority, you will go out with your family and loved ones and make a purchase. But for low value items or for standard products, for example, if you have to buy a charger for your mobile, it's standard. So you trust that if you buy a charger you will get the charger. So why do you want to go out for standard products? You want them. So Amazon may be solving a current problem, and because of pandemic in 2020, Amazon is one of the companies which hired employees. Their stock price increased because sometimes you are at the right place at the right time. Nobody anticipated that most of the people who do not do online shopping would also want to buy groceries and other products, because moving out will be risky considering the pandemic and the disease. So there are some companies like Zoom. They were already good companies, but people never used to use Zoom or Microsoft Teams or Google Hangouts so often as what you and me would have used in this year. So they are solving a current problem. That is why their business grew. Obviously, after a year or so, their business will again normalize, but still they will have an edge. Now there are companies which are solving, traditional problems. Traditional problems are like education. Maybe you open a school. There's nothing new. Schools are running from thousands of years. You also open a school. So if you are solving a traditional problem, you have to give it a creative angle. That okay, I am opening a school, but my school will be different because we will have boarding facility, we will teach them life skills, we will bring them mentors, we will give them food. So if you are solving a traditional problem, you have to be creative. If you are solving a current problem, you have to have scale, because a lot of people want that problem to be solved. If you are solving a future problem, you need to be very, very innovative, bold, and use technology, because people will not believe you. People will make fun of you. People did make fun of SpaceX, Tesla, that how can they compete with a company or a agency like NASA. But it took 18 years for them to get respect and value from the world. And now SpaceX is collaborating with NASA for a lot of projects, is what I have read from Instagram and Google. So future problem, be very strong mentally. People, your parents, your friends are not going to believe you. They are going to make fun of you.
So can you sustain people making fun of you, people insulting you, but the same people will ask you for an autograph maybe 20 years from now? So you need to be mentally very strong if you want to do a future problem solving. You need to be very good in network building if you are solving a current problem, because people don't have time. Solving a current problem, you need to be very quick. If you are solving a traditional problem जो बहुत सालों से है, traditional problem, then you need to give a creative angle to that, because people will say बहुत सारे स्कूल है पुणे में, मैं आपके स्कूल में क्यों अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं? बहुत सारे स्कूल है लखनऊ में, बहुत सारे स्कूल है गुड़गांव में या बैंगलोर में. सो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फ्यूचर की प्रॉब्लम में बोल्डनेस इनोवेशन होना चाहिए, करंट प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं स्पीड होनी चाहिए, स्पीड ऑफ सर्विस. थिंक ओवर इट एंड इन द चैट बॉक्स टेल मी अ फ्यू प्रॉब्लम्स which you would want to solve, which you feel should be solved. मे बी आप बिजनेस मत करो, बट हम जब तक पढ़ाई कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट ही करेंगे, तो एज अ प्रोजेक्ट कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का. सो द चैट बॉक्स इज ओपन. अगर आप चैट में कुछ लिखेंगे मुझे दिखाई देगा. सो यू हैव 2-3 minutes. द चैट इज ओपन. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम आइडिया जनरेशन टेक्निक्स पे काम करेंगे, बट पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. आपके हिसाब से इंडिया में, आपके शहर में, आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में, आसपास क्या प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये सॉल्व होनी चाहिए? कैसे, वो आइडिया में बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है. अच्छे स्टार्टअप्स को जिनको फंडिंग मिलती है या जो ग्रो करते हैं, उनका एक चीज बहुत क्लियर होता है, उनको पता होता है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा ना कस्टमर से. तो थोड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करते हैं. तो एम आई ऑडिबल, रिया, आदर्श एंड तरुण? Yes, sir, Yes, you're sir, you are audible. audible. अच्छा, Yes, sir, you're audible. so I And would we request the request, students, So, yeah, yeah, I yeah, and we so request is request the there students anyone to having drop any? their queries. Yeah, others continue. So I was saying that is there anyone having any question? Like any question regarding any problem you faced in the society, which can be solved through a business? yeah. So don't raise your hand, just chat. So start Yes, chatting. How many students are present today? Adarsh, Riya, or Tarun, if you can tell me what's the sir. number? Sir, we have 50 attendees. 50. Okay, yeah, Yes, that's fine. Yeah. yes, So Shashank. ऐसा Others, हो ही नहीं Shashank raised सकता. his hand. Shashank, you can put your Others, question in the chat huh. box. So if there are 50 attendees, then we should have 50 problems minimum. But let's see how many come up here. Absolutely, sir. So in the pandemic this year, initially in April, May, June, I faced the problem of lack of exercise and weight increase. So I gained around 4 kgs in the pandemic. Obviously, I lost two, and two is further to be lost. But that was one thing. The other was strain to my spine with over usage of laptop. So everything was on laptop. So that was the second problem. So I am talking about what I faced, these two problems in 2020 as of now. Varun, I think many students are facing lack of skills. It's a very broad problem. Be specific, Varun. You're on the right track. So be specific that I believe X number of students, which type of students, face which lack of skills. Skills are 1,000, Varun. Unless you tell which skills, so it's very difficult to take it forward. So Tarun is saying people face problems in investing their funds. So
One is financial literacy, Tarun. One is investment literacy. So financial literacy means how can you manage your finance, savings, a bit of investment, what to do, what not to do. Investment is how to invest. Now, there is something called value investing, which we were taught at Columbia Business School. A lot of people are shy, Tarun, and they are afraid of investing in the stock market because they believe they will go for a loss. So, educating awareness and maybe creating, encouraging them to invest 500 rupees a month and telling them how to evaluate a company's balance sheet. So, a lot of people see the company balance sheet, but they do not understand anything. So maybe basic understanding of a balance sheet, of a profit and loss statement, of a cash flow statement, or how to understand whether to invest in Bharti Airtel or to invest in Reliance Jio. Yes, great. Thank you for sharing. Awareness about fitness and health in urban as well as rural. Yeah, Shashank, you are right. So there are apps, there are gyms, and there are yoga classes, and there are so many other things. And yeah, that's a problem because obesity or there are various difficulties which come because of not investing time in health and fitness. Maybe people are aware, Shashank, but they do not have any incentive to go for a morning walk or to go for a run. Yeah, so build on this problem, write more bullet points on this problem, and you will get clarity. So problem lead to idea generation. Tarun, Shashank, and Aniket. So first problem, then idea. Land pollution, Aniket. Yes. Disposing of plastic and garbage. Yes, government does something, but how much we help the government is questionable. Mental as well as physical health, Shashank, absolutely. Sports are not encouraged in our families or in our schools or colleges. They are just meant to be done, for a change. It is not a part of our day. And yes, the impact comes once you are in your 40s and 50s. So people who actively are in sports, they remain, fitter for a longer duration of life. Yes, सो थिंक अबाउट दैट. इसका नुकसान क्या होता है प्रॉब्लम का, वो देखो आप प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन भी लिखो कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अगर हम स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं, अगर हम मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो उसका इम्प्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंस क्या होता है. लोगों को प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, लोगों को इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस से डर लगता है. लोग शायद बायजूस इसलिए यूज करते हैं, उनको लगता है कि अगर ये नहीं करा तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा या हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे. तो जो भी ब्रांड्स हैं वो प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके बताते हैं इम्पैक्ट में, कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया और अगर आपकी कार या बाइक का अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट होता है तो नुकसान हो सकता है. इम्पैक्ट से लोग ट्रिगर होते हैं. इंश्योरेंस किसी का कराने का मन नहीं करता. नोबडी वांट्स टू स्पेंड मनी. मैं अगर आप लोगों को बोलूं आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया, 90% ऑफ यू वुड से आई डोंट नीड इट. बट अगर हम आपको उसका इम्पैक्ट बताएं और फायदा बताएं कि अगर आप यंग एज में प्रीमियम भरते हो तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है. अगर आप 10 साल बाद इंश्योरेंस लोगे, आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा. आपको कराओगे तो सही आप लाइफ इंश्योरेंस कभी ना कभी में, बट अगर आप जल्दी कराओगे तो आपको अगले 30-40 साल तक कम पैसा देना है. बट ये किसी को समझाना पड़ेगा. स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग. या आदर्श, इट्स अ मिथ. कुछ लोग उसको गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं, बट वो कुछ लोग, एक परसेंटेज होगा, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, या. सो प्रॉब्लम को आपने लिखना शुरू करा. आई एम वेरी हैप्पी. आदर्श, शशांक, अनिकेत, तरुण, Varun. So I'm happy that you have the courage to share and express. प्रॉब्लम को अब इसको आगे लेके जाओ. प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या होगा आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आपकी अर्निंग पे क्या होगा, प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे क्या होगा. इन तीनों पे जब आप टच करते हो तो कस्टमर को समझ में आता है कि हाँ, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का पैसा, फैमिली को कौन ध्यान रखेगा.
अगर मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम हुई तो मैं ज्यादा नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो उसको कन्वर्ट करो फैक्ट से। Agraj, hi, good afternoon, Agraj. What do you think we are lacking as a society to create good entrepreneurs? Look, entrepreneurs, Agraj, have been coming from the time we were born. You know, so from the last 5, 10,000 years, people are doing entrepreneurship. There is nothing new. Maybe as of now, what we are lacking is entrepreneurship in the beginning, Agraj, is not convenient. मुश्किल होता है, चैलेंज होता है, पैसे कम मिलते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बट एक 30, 40, 50 हजार की अगर हमें जॉब मिल जाए तो भी मेहनत करनी पड़ती है, बट हर महीने 30 तारीख को पेमेंट आ जाती है। सो मे बी वी नीड मोर एनकरेजमेंट फ्रॉम द फैमिली साइड, maybe we need more encouragement from the government side, maybe we need more encouragement from you society, Agraj। अगर शशांक ने कोई बिजनेस खोला है अग्रज, और शशांक आपका फ्रेंड है या कांटेक्ट है, तो आप शशांक से सामान खरीदना चाहोगे या स्टिल एक हाई ब्रांड से खरीदना चाहोगे? सो जो इनिशियल स्ट्रगल है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्ट्रगल इज पेन, and we as a society or human beings are born, our body is born to avoid pain। तो हमें लगता है कौन पड़े मुश्किल में यार, 5 साल 10 साल लग जाएंगे अपना ब्रांड बनाने में, छोड़ बाद में करूंगा बिजनेस, अभी जो आसान है वो करता हूं। तो इट्स पेरेंट्स अग्रज, इट इज गवर्नमेंट, एंड इट इज वी। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर encouraging or not encouraging entrepreneurship। And if and when you become a parent, Agraj, how you take care of this to your children? Do you tell them कि हाँ करो, fall down, कोई बात नहीं, that is how you grow? Or you tell them कि नहीं नहीं मैं हूं ना, तुम कुछ मत करो, as a father मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मजे करो? So what is the approach you have as a parent? So depends। Shashank, good afternoon। Poor mental as well as physical health leads to anxiety। यस, यस। अब शशांक अगर आप किसी को बताओगे कि मेरे पास एक सोल्यूशन है टू सॉल्व मेंटल हेल्थ, वो बोलेगा मुझे सोल्यूशन से मतलब नहीं, बट आप उसको पहले बताओगे मेंटल हेल्थ क्या होता है, आप उसको रियलाइज कराओगे हाँ मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम है, पहले वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेंटल हेल्थ इज अ प्रॉब्लम। उसके बाद आप उसको उसका इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंस बताओगे कि इससे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लैक ऑफ फोकस, सोशल फियर, शॉर्ट टेम्पर, आप गलत डिसीजन लेते हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड सो मेनी अदर इश्यूज। तो उसका इंटरेस्ट आएगा, वो आपके पास आएगा, हाँ होता तो है, आई ऑल्सो एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड समटाइम्स आई गेट बोर्ड, सो या व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन यू हेल्प मी? सो आपने उसको पहले बताया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कॉन्सिक्वेंस बताया, जब कॉन्सिक्वेंस से उसको लगा हाँ ये तो नुकसान हो रहा है मेरा, तब वो आपसे दवाई मांगेगा। अच्छा मैं इसको ठीक कैसे करूं? सो नाउ यू डोंट हैव टू सेल द प्रोडक्ट शशांक, यू हैव टू ऑफर द प्रोडक्ट। सेलिंग का मतलब है उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है या नहीं, जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेच दिया, जो बहुत सारे लोग करते हैं। कस्टमर से बात ही नहीं करते कि उनको जरूरत है भी या नहीं, सीधा अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। टिपिकली लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग बंद कर देते हैं उनसे बात करना। Shashank, I'm very happy with the way you have articulated. So well done, Shashank. You're on the right track. Hi, Mayank. Good afternoon. In the future, we may face scarcity of organic food and vegetables. Yes, काफी साल से चल रहा है कि हाँ वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को अच्छी क्वालिटी का दिखाने के लिए उनमें इंजेक्ट करा जाता है मटेरियल, आई डोंट नो व्हाट मटेरियल, बट यस स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वेजिटेबल क्वालिटी पे बात करो आप, स्कार्सिटी और वाटर स्कार्सिटी होने वाला है मयंक, पानी नहीं होगा बहुत सालों में, पीने वाला पानी। मयंक सही सोच रहे हो, इसका इम्पैक्ट लिखो, अगर ये ऑर्गेनिक फूड और वेजिटेबल नहीं होगा तो उससे नुकसान किसका होगा और कैसे, उसको डिफाइन करो। राइट ट्रैक मयंक। हाय वरुण, many of the people want to leave cigarettes but they can't, so it's more like a habit, yeah, unfortunately, so we can make e-cigarettes which have no effect। वरुण आप बहुत जल्दी सॉल्यूशन पे आ गए, अभी प्रॉब्लम पे ही रहो।
सिगरेट पीना लोग शुरू क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं? उस लेवल पे अगर आप अवेयरनेस करो तो काफी लोग इस इम्पैक्ट में नहीं आएंगे। और जो हैबिचुअल बन गए हैं, जिनको निकोटीन की हैबिट हो गई है, उनको हटाने के लिए पहले हटाने नहीं, उनको इम्पैक्ट बताओ अभी। बिकॉज ये ज्ञान सबके पास है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट जो भी लोग पीते हैं वो अपनी मर्जी से पीते हैं। सो अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है वरुण, वो इग्नोर करते हैं अवेयरनेस को। एवरीबडी इज अवेयर दैट दे शुड नॉट स्मोक अ सिगरेट, बट दे डू इट। सो अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है, इम्पैक्ट। उनको लगता है अभी थोड़ी कुछ होगा, मेरे लंग्स ठीक रहेंगे ना अभी 20-30 साल, तो जो होना है देखा जाएगा, अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो सो अभी सोल्यूशन पे मत जाओ वरुण, अभी प्रॉब्लम को और अच्छे से डिफाइन करो और उसको कनेक्ट करो उनकी लाइफ के साथ। सो कनेक्टेड विद लाइफ दैट पीपल विल नॉट लाइक टू मीट यू अगर आपका सिगरेट का ब्रेथ है। यू मे हैव अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो वो उसको और डिफाइन करो। हाय, गुड आफ्टरनून गौरांश। आई एम हैप्पी दैट मैं आपको देख तो सकता नहीं, बट आपके मैसेजेस तो पढ़ सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। गौरांश, good afternoon. I think we as students must learn high income skills. Yes, yeah, there is no age and time to not learn skills. So there are multiple skills, Goranj. Pro Wisdom is doing one of the roles to solve this problem of converting education to livelihood. कि हाँ, पढ़ाई सबकी होती है, बट सबको बराबर सैलरी क्यों नहीं मिलती? फिर अगर आप बराबर फीस दे रहे हैं तो आपको बराबर सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर आप बराबर अटेंडेंस दे रहे हैं तब भी आपको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आपके और आपके फ्रेंड्स के मार्क्स बराबर आए हैं तब भी आपको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली लोग सैलरी आपको मार्क्स के नहीं देते, लोग आपको सैलरी देते हैं स्किल्स की, कि आप उस कंपनी के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, उस रोल के लिए क्या कर सकते हैं। या तो आप किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ाएंगे या उनके खर्चे कम करेंगे। सो या तो आप जाएंगे ऑपरेशंस में, एचआर में, फाइनेंस में, या आप जाएंगे सेल्स में, मार्केटिंग में, या बिजनेस डेवलपमेंट में। तो आपने बिल्कुल सही बोला गौरांश, हाई इनकम स्किल्स स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ये आनी चाहिए हमारे बच्चों को, या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मैं बीबीए एमबीए करूं, बहुत अच्छी बात है, मुझे डिग्री मिलेगा, बट डिग्री की सैलरी नहीं मिलती, डिग्री से रिस्पेक्ट मिलती है। सो रिस्पेक्ट मिलेगी दैट okay, you are educated, you are BBA, you are MBA from such and such college। मनी स्किल से मिलता है। सो हाई इनकम स्किल्स लाइफ में काम आती है गौरांश, सो वेल डन, राइट ट्रैक। बट इसको और डिफाइन करो, ये ना करने से नुकसान क्या होगा? आपने ये बता दिया क्या करना चाहिए, सबको पता है, ना करने से नुकसान क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, तब लोग डिसीजन लेते हैं। Atharv, hi, good afternoon. We started organic farming for better quality of product. Oh, that's fantastic, अथर्व। अगर आप और आपकी फैमिली ये बिजनेस करते हैं, आई वुड वांट टू नो मोर, और मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इन वेरी हम्बल वे, एज प्रो विजडम और एज पुनीत रमन, वील बी हैप्पी। So fantastic, people are attracted to your business। Okay, Atharv, I look forward to meeting you। Shashank, how do we differentiate between a customer who has a problem or not, as people are not ready to express? आपको बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा उनसे, and people do not have time and seek lack of time as the biggest excuse। शशांक, सब लोग तो बात करेंगे नहीं आपसे, तो आपका आपका काम है अपना एफर्ट करना। जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, कुछ करेंगे। सो इट्स ऑलवेज अ रेशो। सो दिस इज लाइक अ 20 to 30% रेशियो पे आपको काम करना पड़ेगा शशांक। इफ यू आर टॉकिंग टू 10 पीपल और इफ यू आर गिविंग अ क्वेश्चन टू 10 पीपल, 2 और 3 उसको सीरियसली देंगे, आपको फीडबैक लेंगे, तो आपको 20-30% के रेशियो में ऑपरेट करना पड़ेगा। शशांक, connect to people in your city, connect to people where you are studying, connect to people on your Twitter handle, connect to people on Instagram, connect to people on LinkedIn, connect to people in person, go to a market, show your ID card। I am a student of Bharati Vidyapeeth IMED। I am doing a project on understanding the gaps in mental and physical health
and why do people do not spend time in that? So sir, मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहता हूँ, कुछ 10 क्वेश्चन पूछूंगा, यस नो मे बी, और आप उसका कुछ आंसर दे दीजिए, मैं नोट कर लूंगा। मैं फोन पे भी पूछ सकता हूँ, मैं गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उनको ईमेल भी कर सकता हूँ, मैं उनसे मिलने भी जा सकता हूँ। जब आप ये सारे काम करोगे शशांक, कुछ लोग फिर भी आपको मना करेंगे, बट कुछ लोग हाँ भी करेंगे शशांक। तो आप स्टार्ट करके अपना रेशो बताना कि मैं 100 लोगों से मिलने की मैंने कोशिश करी, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर शशांक आपको 20 से 30 रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। सो टेल मी इन द नेक्स्ट सेशन अगर आपको 20% to 30% रिस्पॉन्स मिला और कैसे मिला। आई विल बी हैप्पी टू लर्न। Hi Kanak, I'm planning to start my own business. Congratulations. Tiffin food, very good. Where I'll be using digital and very good Kanak. But आपने प्रॉब्लम तो बताई नहीं, आपने तो सारा बिजनेस बता रहे हो। आप प्रॉब्लम किसकी सॉल्व कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम है क्या? सो आपने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया। आई एम श्योर आपने होमवर्क भी करा होगा, बट अभी जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कनक त्यागी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु इज द कस्टमर, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किस शहर में सॉल्व कर रहे हो, और उनकी प्रॉब्लम वो अभी कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आप इस बिजनेस में नहीं आएंगे तो क्या उनको खाना नहीं मिलेगा? अभी कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम। अगर आप टिफिन बिजनेस में आओगे तो ये कोई नया बिजनेस नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं। आप कैसे करोगे नए तरीके से, वो आइडिया की बात है कनक। अभी हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। And boys and girls, the major mistake budding people and even entrepreneurs make, like me, you and me, हम बहुत जल्दी आइडिया पे आ जाते हैं। We should spend decent time on identifying, framing, writing, editing, researching the problem and its impact, because that is the base or the platform on which you are making a house. अगर बेस और प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं होगा, उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। यस, बिल्डिंग बनानी जरूरी है, बिल्डिंग ही अच्छी लगती है, बेस कोई नहीं देखता, बट बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना, नहीं तो बिल्डिंग 1 साल में बंद हो जाएगी फिर। सो बिल्ड ऑन इट कनक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उद्देश्य सिंह, good afternoon. How to make parents believe that their child is ready to face the world? Uh, Look, parents are the best for us, but they are not going to live our life. We are going to live our life. So they can't give our exam in the school. If they are, maybe my mother is a maths teacher, but she can't give my maths exam. Na? I have to give my maths exam. My father is great in communication skills, but he can't give my interview. Na? I have to give my interview. My father is a great business person, but he can't do sales for me. Na? So this is experience Uddesha, and let's have the communication on WhatsApp. It's an excellent question faced by 90 out of 100 students, and this is something very, very common. So maybe awareness, mentoring, and proof of concepts. Some parents trust their children easily, that कोई बात नहीं, गिरेगा ठीक हो जाएगा, गिरेगा ठीक हो जाएगा, गिर गिर के ही सीखते हैं सब। And some parents fear, and there are hundreds of reasons of fear उद्देश्य, वो हम अभी ओपनली बात नहीं कर सकते, बात करेंगे। बट अगर कोई फियर कर रहा है, आपको कुछ काम करने से रोक रहा है, तो हमें उनको समझाना चाहिए। समझाने के बहुत तरीके होते हैं, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। हम किसी से उनको मिलवा सकते हैं, that okay, if my daughter says that I want to become a creative person, I want to go in media and entertainment, maybe as a parent I'll say नहीं, ये बेकार फील्ड होता है, मत कर। But if she really is passionate, she will work hard to make me meet boys and girls, to make me meet people, to make me show the life history and the journey, कि हाँ, हर इंडस्ट्री में लोग खराब होते हैं और हर इंडस्ट्री में लोग अच्छे भी होते हैं। मैं ये काम करना चाहती हूँ और ये काम में मैं एक्सेल करूंगी। मैं एक्सेल करूंगी तो खुश रहूंगी, मैं एक्सेल करूंगी तो ज्यादा पैसे कमाऊंगी, मैं एक्सेल करूंगी तो अपना बेस्ट पोटेंशियल कर पाऊंगी। अगर आप मुझे फोर्स करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दोगे तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद बन जाऊं, बट बुरी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहूंगी ना, मेरा मन तो है नहीं। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है उद्देश्य। दिस इज नॉट अ वन ब्रेकफास्ट मीटिंग सेशन, दिस में टेक अ फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स।
for a child to convince their parents. And ये हो जाता है, बट स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये कस्टमाइज होता है. हाउ माई पेरेंट्स विल बिहेव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ योर पेरेंट्स विल बिहेव. सो देर इज नो वन टैबलेट फॉर ऑल, बट इट्स अ वेरी रेलेवेंट प्रॉब्लम. उद्देश्य इसका इम्पैक्ट बताओ. आप पेरेंट्स की तरफ से हो बात कर रहे हो अभी, या चाइल्ड की तरफ से? इम्पैक्ट बताओ. तो रिया, क्रिटिसिज्म. रिया, क्रिटिसिज्म तो ओके, वी कैन टॉक ऑन व्हाट्सएप. Criticism is fine. You have to be mentally strong. We have to be. I am not saying that this is your problem, but criticism to till the last day of our life hota rahega. So we need to have a filter in our brain. Effective criticism, genuine feedback, take it, kill your ego. हाँ, मैंने गलती करी है, मैं ये नहीं करती, ये मुझे करना चाहिए. जो गलत फीडबैक है, इग्नोर इट. There is no scientific way, but yeah, there are techniques. We can talk about it. You will be solving the problems of students here, Kanak. Okay. Okay. Okay, understood, Kanak. Great. Let me show you. So I'm very happy with all of you who contributed, and equally happy with those of you who could not contribute on the chat but have thought. अगर आपने सोचना भी शुरू करा है तो एजुकेशन शुरू हो गई आपकी, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट लिसनिंग, एजुकेशन इज थिंकिंग. तो आई एम वेरी हैप्पी इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग. आई विल डू द स्क्रीन शेयर, एंड इफ वन ऑफ यू कुड कंफर्म थ्रू एन ऑडियो नोट कि आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है, आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा. So, is it visible? Yes, sir, it is. Yes, sir. The screen Now, is visible. Okay, thank you. Thank you, friends. Yeah, we can see the workshop agenda. Okay. So this is what we'll be going to do in 8 hours. We are in the third hour of our engagement, and we have started to talk about problem identification today. And let me move to the slide. So I'll be skipping a few slides which we have discussed earlier. So some of the slides are better in a discussion where we can talk, and on a webinar this may not be relevant or viable. Okay. Okay. So this is what I want you to do starting today in the next 4 or 5 days. And if you have a WhatsApp group, please don't add me as the first member. Add all the students first and add me as the last member. Point number 1, what you have to do is identify and talk about real problems. Brainstorm. If you can work in teams of 2 to 3 members, it's the best, but it's not a compulsion. If you can, if you want to work alone, please work alone. So I would want to know that Adarsh is working on solving which problem, Riya is working on solving which problem, Tarun is working on solving which problem. All of you need to identify multiple problems as an individual or as a team. Team can be 2 to 3 people, 2 to 3 students, and then finalize that problem first. Do not finalize the idea, finalize the problem. The second is idea generation. And on the WhatsApp, I will share with you, there are some techniques of idea generation, which I'll share in the last 5 minutes of our discussion as well. So first, include the market analysis. Like Kanak was solving the problem of students as tiffin service. So Kanak needs to, in her discussion with her founding team members or alone, find out market analysis, that as of now students in Pune or students in Kothru or students in Baner or whichever area you want to start, abhi kya kar rahe hain wo, how are they solving the tiffin problem or the food problem now.
Then do the strength, weakness, opportunity, threat of your idea. Because आप कुछ नया काम नहीं कर रहे हो तो आपको डिफरेंट काम करना पड़ेगा. या तो नया काम करो या डिफरेंट काम करो. आपका काम टिफिन सर्विसेज का नया नहीं है, डिफरेंट हो सकता है. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहां पे आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, अपॉर्चुनिटी, और थ्रेट क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा. और ऑब्वियसली जब हम व्हाट्सएप पे होंगे, मैं आपको अपना ईमेल आईडी, नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स भी शेयर करूंगा. तो हम जो भी मेहनत करेगा, हम उसके लिए डबल मेहनत करने को तैयार है. यू ऑल्सो नीड टू डू सम सैंपल चेक ऑफ कंपटीशन, कि वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं टिफिन, कितने पैसे पे कर रहे हैं, कितनी डिलीवरी टाइम लेते हैं, डिलीवरी के पैसे लेते हैं क्या, टिफिन वापस कैसे लेते हैं. So from Mumbai Dabbawalas to the normal tiffin service in Pune, do the analysis. कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपका आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको फोकस करना है आप आइडिया को डिफरेंट और बेटर कैसे बना सकते हो. टैक्सी ऑपरेटर्स पहले भी थे, टैक्सी ड्राइवर्स पहले भी थे, लोग पहले भी टैक्सी से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाते थे. ओला और उबर ने टैक्सी यूज करने के प्रोसेस को बदला है. टैक्सी नहीं कोई नई बना दी जहां पे 25 लोग बैठ जाते हैं. टैक्सी भी वही है, ड्राइवर भी वही है, पैसेंजर भी वही है, वेन्यू भी वही है, प्रोसेस बदल दिया. सो मे बी प्रोडक्ट नहीं बदला, प्रोसेस बदल दिया. मे बी ऑनलाइन एजुकेशन ने प्रोसेस बदल दिया. पहले आप कॉलेज जाते थे, आज कॉलेज आपके घर आया हुआ है. सो राइट नाउ भारतीय विद्यापीठ इज इन योर होम ना, you are not going to Bharati Vidyapeeth. So, because of the challenge or the time we are living in, or maybe the future, you would not need to go to a building to study. The college will come to you, maybe the school will come to you. So my daughters are not going to school, the school is coming to my house. Kaise? Obviously online. What is your USP? USP का मतलब होता है what is that one or two factors which differentiate you from all the other players. What is your unique selling proposition? क्या खास बात है आपके बिजनेस आइडिया में जो आपको कस्टमर के पैसे दिलवाएगी. क्योंकि कस्टमर के पास तो चॉइस है ना, तो अगर कुछ स्पेशल होगा तभी कस्टमर आएगा ना. और वो बहुत फैक्टर्स होते हैं, हम आगे वाले सेशंस में सीखेंगे. एंड आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. यू कैन स्टार्ट नाउ. आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. आप में से 7-8 स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दी है. मैं उनको बोलूंगा कि प्रॉब्लम को और डिटेल में लिखो और प्रॉब्लम को कन्वर्ट करो इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस, इम्प्लीकेशन. खाली प्रॉब्लम बोलने से कस्टमर को समझ नहीं आता. प्रॉब्लम का इम्पैक्ट बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, इम्प्लीकेशन बताओ, उसके बाद सोल्यूशन पे आओ. अपना प्रोडक्ट या सोल्यूशन इमीडिएटली मत बताओ. The problem is India is a populated country. There are so many students who go for school and college education. However, not everyone is able to get the same salary. Not everyone is able to start their business. Not everyone is able to earn money despite having multiple degrees, marks. This makes them feeling less confident. This makes them do less optimum jobs. This makes them agree to less money. They can charge more. Overall, because of unhappiness, they are unable to lead a good life for them or their family. Their pro wisdom comes in. We help to connect education with livelihood. So we either take our mentees to entrepreneurship or we take our mentees to employability, which is help them get a sustainable, strong career or help them set up a sustainable, strong business. This is who we are. Would you want to know more about us? So that is how I would pitch prowisdom.in to prospects. प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का इम्पैक्ट बताया, कॉन्सिक्वेंस बताया, कुछ ना करने का इम्प्लीकेशन बताया और फिर बोला कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. करना है क्या सॉल्व आपको? अगर मैं सीधा ही बोलूं किसी को भी जाके प्रोविजडम क्या करता है,
वो बोलेगा मुझे क्यों बता रहे हो यार, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैंने पूछा आपसे? सो प्रॉब्लम इज एनी डे मोर इंपॉर्टेंट at the beginning, at the core of every business. Then comes the idea. So these are the two things which I would want you to do. I hope you would have noted down some of the bullet points. Nothing is to be, copied. आपको इतना डिटेल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. एंड ये मेरे पास एक अच्छा आर्टिकल है आइडिया जनरेशन टेक्निक्स का. ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा बिकॉज दिस इज अ लिंक. वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां पे आप मल्टीपल फ्रेंड से बात करते हो. वन इज माइंड मैपिंग, ये हम आपको सिखा सकते हैं कि आप आइडिया को लिखते हो और उसको ड्रॉ करते हो एक प्रॉब्लम को. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सिनेप्टिक्स. स्टोरी बोर्डिंग एक टेक्निक होती है, रोल प्लेइंग होता है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग होता है, फोर्स रिलेशनशिप्स, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस. इस पे हम क्या करेंगे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा ये व्हाट्सएप पे. आप लोग इसको पढ़ के आएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. सो ये जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, आप भी इंग्लिश पढ़ेंगे, इसको पढ़ के आएंगे, रिसर्च करेंगे और फिर हम इस पे बात करेंगे कि आइडिया जनरेशन टेक्निक्स कौन सी आपको समझ में आई और कौन सी समझ में नहीं आई. यस, देयर इज समथिंग डे ड्रीमिंग एज वेल, रिवर्स थिंकिंग, questioning assumptions, brainwriting, wishing. Wishing is a great technique. Socializing, collaboration. तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मैं आपको स्पून फीड करने में बिलीव नहीं करता हूं, तो मैं आपको पैसिव लर्निंग के लिए हेल्प नहीं करूंगा. दैट इज एब्सोल्युटली श्योर. जो जब आप मेहनत करेंगे, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा टू हेल्प यू ग्रो, बट स्पून फीडिंग नहीं करूंगा बिकॉज स्पून फीडिंग से आपका नुकसान होता है एंड आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग नेगेटिव फ्रॉम प्रो विजडम टू यू. सो दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आज हमने बात करी है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड आइडिया जनरेशन का. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. अनिकेत, हाय, गुड आफ्टरनून अनिकेत. हाय, गुड आफ्टरनून शशांक. मैंने आपका अभी ये देखा है, जस्ट अ मिनट. शशांक, आप पूछ रहे हैं हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट इश्यूज. शशांक, ये बात करके सॉल्व हो सकता है. वी कैन आल्सो हैव अ जूम कॉल विद स्टूडेंट्स हु फेस सिमिलर इश्यूज. एंड सेल्फ डाउट इज बेसिकली शशांक कि आपने अभी तक सक्सेस नहीं देखा उस एंगल में, तो आपको डाउट हो रहा है. Maybe once you get success, self doubt कम हो जाएगा. Second, if you meet people who have the same journey, self doubt कम हो जाएगा. या mentally हम वो चीज अभी करना नहीं चाह रहे, तो self doubt is also कि हाँ मैं करूं या ना करूं, वो भी होता है. So इसको सॉल्व कर सकते हैं शशांक थ्रू प्रैक्टिस. ओके. In online lectures face range of problems. Mental health is yeah, but yes Aniket, I can understand if there are 10 online lectures in a day, it's tiring for the brain and eyes. But 3 to 5 lectures it's fine, because अगर आप कहीं पर जॉब भी करेंगे तब भी तो आप ऑनलाइन ही मीटिंग्स करेंगे. Nobody will call you to the office as of now. Yes, can be solved, Aniket. Okay, great. So this is your question time. What we have covered today is identifying problem is the most important thing for starting a business or thinking about business. And problems are converted into solution. So solution to a problem is called nothing but idea. So we'll talk about idea. We'll also create a WhatsApp group. I don't know who will take the initiative. If there are different classes or different batches, we need one group. So Ria, Adarsh, Tarun, I don't know who will take the initiative. Please do that. Sir? Add me at the last. Yes, sir. Yeah. Sure, sir. So we have a group. We will add you in that, and ma'am will add you in the group. We have a group of ED cell. No. We are already having a group with the MBA students. So I'm sure I'm talking to the BBA, BCA students Yes, sir. here. Yes, The sir. We have a group undergrad of students.
Yes, sir. We have a group of Okay. ED, cell of undergraduate students. We will add you in Okay, that. so then this will be separate from the other. ठीक है, Yes, it's sir. fine. Yes, sir. It's fine. Understood. Thank you. Thank you, sir. So happy to have your thoughts, boys and girls. I don't know who all are there. I see some people there, some not there. So any queries which you have on what we have done or what we have to do before we meet after 15 days, this is the time to ask. After 15 days, no excuses. मैंने सुना नहीं, मैंने करा नहीं, मेरे ये प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम सबको है. We don't care about problems, we have to bring results. So yes. Okay, hi Sandeep. Yes, you can ask. लिंक्डइन पे ग्रुप नहीं बनेगा संदीप. लिंक्डइन पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट ग्रुप में थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन होता है बिकॉज मोबाइल सबके पास रहता है 24 घंटे. एंड इट्स अ सिंपल वे टू टाइप व्हाट्सएप एंड आस्क. यस. और संदीप, हम में से कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं मेरे जैसे. आई एम ऑल्सो अ वेरी प्राउड इंट्रोवर्ट, जो बात भी नहीं करते और टाइप भी नहीं करते. तो कई बार संदीप, आपका क्वेश्चन उनका भी क्वेश्चन होता है. तो अगर एक स्टूडेंट पूछता है, उससे 5 स्टूडेंट्स का आंसर मिल जाता है. तो please do that. Tarun is asking a question. All the internships, I don't know if you're talking about summer internships which you get in a company office, or you are talking about a live internship, live project. They don't even give a certificate if we don't generate revenue for them. So maybe negotiate. Negotiation skills is such an important skill, Tarun. Sales skills is such an important skill जो आपको हर डोमेन में काम आएगा. आप ज्वाइन ही मत करो ना उनको, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे. फॉर्मल कम्युनिकेट करो ईमेल पे, व्हाट्सएप को मत बिलीव करो. उनको बोलो कि अगर मुझे सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, ठीक है, आप मुझे इंसेंटिव मत दो. मैं आपकी कंपनी के लिए रेवेन्यू या बिजनेस नहीं जनरेट कर पाया, ग्रेट, मत दो मुझे इंसेंटिव. बट मैंने आपके लिए 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन काम करा है ना, तो मुझे उसके प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे. अब आप उसको सर्टिफिकेट बोलो या लेटर हेड पे दे दो या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, जो मर्जी वर्ड बोलो, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए. बिकॉज एज अ स्टूडेंट ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है इंटर्नशिप, और मुझे उनको किसी को भी अगर दिखाना होगा, आई नीड अ डॉक्यूमेंट. सो आई होप आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे. तो बिना डॉक्यूमेंट के मैं क्या करूंगा. तो नेगोशिएट एट द बिगिनिंग, तरुण. या बट ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था तरुण, अभी हम इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहे. ओके, एनी अदर क्वेरी बॉयज एंड गर्ल्स. हमने आज जो करा, हमें जो 15 दिन में करना है. सो प्लीज प्लीज आस्क. A very important skill which all of us would have to learn in our life is communicating verbally or through written communication. जो हम अभी कर रहे हैं written communication, मैं verbal कर रहा हूँ, आप लोग written कर रहे हैं. किसी भी भाषा में आप बात करें, बट साइलेंट रहने से कोई फायदा नहीं होता लाइफ में. हाउ डू वी नो दैट, how do we perfect to become an entrepreneur? Varun, you can never become a perfect entrepreneur. You can become a better entrepreneur. Better. So Varun can be a better than Varun in 2021 should be better than Varun in 2020. Varun's company in 2021 should be better than Varun's company in 2020. There is nothing called perfect in life. परफेक्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड वरुण. आपको क्या परफेक्ट लगता है, वो किसी को इम्परफेक्ट लगता होगा. सो इट्स अ जर्नी वरुण. यू कैन लर्न स्किल्स वरुण, बट इवन इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर जेफ बेजोस, मिस्टर मार्क जकरबर्ग, मिस्टर आनंद महिंद्रा, मिस्टर सुनील भारती मित्तल, दे डोंट कंसिडर देम टू बी परफेक्ट. दे आर इम्प्रूविंग, और वो भी गलती करते हैं. मिस्टर जैक मा
गलती करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. Rakshanda Rajendra is asking a question on the chat. I would request if Riya, Adarsh, Tarun, or Dr. Bharti ma'am can Yes, answer. yes, sir. Rakshita, Sir, we will to add you in the group. resolve that issue, we can make a special group on WhatsApp so that everyone from MBA, BCA, or BBA can join that group to enhance their EDCL knowledge. Will that be fine, sir? Yeah, MBA is already created. Yeah, so we'll add the MCA Let's not students too. confuse those. MBA is already created. Okay. Okay, sir. Sandeep, good afternoon. Sandeep, I don't know why you missed the first two sessions. So I don't know if the recording is there. Maybe your college is doing the recording. I don't know. So you can check. I am not doing the recording, Sandeep, because this is the Microsoft Teams of your college. Sandeep, we will ask Bharti ma'am for this. We will let you know. Hi, Shashank. शशांक नो एडवाइस इट्स अ जर्नी मैं उस जर्नी पे चल रहा हूँ आप भी चलो साथ में आपकी अगर हेल्प कर पाएंगे तो बिल्कुल करेंगे सो आई कैन ओनली गिव यू वन वर्ड संदीप प्रिपेयर एंड स्टार्ट प्रिपेयर मींस नॉलेज सो संदीप टू वर्ड्स नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस नॉलेज ले लो अभी और एक्सपीरियंस शुरू कर दो सर सारा लाइफ का गेम यही है नॉलेज इज एजुकेशन लर्निंग प्लस एक्सपीरियंस मेंटरिंग मिल जाएगी आपको सो संदीप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन शशांक आई एम सॉरी शशांक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया वरुण यू आर रेडी टुडे you were ready yesterday Varun you would be ready tomorrow and there is never going to be a perfect day when you will be very happy and motivated after hearing Sandeep Maheshwari's motivational talk you are ready now Varun at 1 o'clock so in what I am saying in a very humorous way Varun is you will never be ready आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जब भी आपका मन करे रेडी तो कभी नहीं होने वाले आप कोई रेडी होता ही नहीं कभी कभी भी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा एकदम नहीं होगा बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होगी तो आपको कभी ना कभी स्टार्ट करना पड़ेगा और अगर बिजनेस नहीं भी करना वरुण जो भी आप करो लाइफ में जॉब करो आप कभी भी रेडी नहीं होगे आप कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा okay any last queries from any one of you students uh, any inputs Bharti ma'am if you're there then we'll meet them after 15 days or from the organizing team Riya Adarsh Tarun and कुछ और लोग भी हैं मुझे आपका unfortunately I'm sorry नाम नहीं पता तो any inputs suggestions questions Sir, it was a very fruitful and knowledgeable session for us, all of us who really wanted to start a startup or who have the ideas. So you are helping us to know how they can start their idea. It was a great session. Yes, sir. हाँ Thank you अगर so आप much, Puneet sir. Good okay session. okay okay thank you Riya thank you so much ma'am so 15 days we'll meet after 15 days so all the best and thank you for your time So Yes, sir. I would Thank you. like to conclude. Thank you, sir. I would Yes, like to Riya, go conclude on, go today's on. webinar. Thank you, ma'am. I would like to conclude today's webinar by extending my regards and thanks to our guest speaker, Mr. Puneet Raman, sir, and the faculty, students, and audience from IMT Pune. Thank you, sir, for your valuable time. Thank you very much, sir. We you're have both learned welcome a you're lot from both you. welcome all of you thank you so much the And learning is last, mutual thank Thank you you, very sir. much, sir. And last but not the least, I'll say that attendance link will be sent in the groups. Please don't forget to mark your attendance.
Okay, bye. Have a good weekend. Bye. All right. Same to you, So sir. Thank yeah, you, sir. bye. Same So to we you. are Thank you very closing much, the sir. link. Yeah, closing. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir.